Hello friends, welcome to our channel Key of Education Zone. Today we will try to learn another topic, OSI model of networking in this video. Before starting, I want to tell you, don't skip this video because it will tell you all the detail in every time. Another thing, don't forget to like this video and share it. And if you are not yet subscribed our channel, then subscribe and press the bell icon to get the notification of this type of videos at first. So let's start. OSI model. OSI, the full form is Open System Interconnection. आज हम लोग OSI मॉडल के डिटेल ले रहे हैं, जो OSI मॉडल का फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. ये OSI मॉडल 1984 में बनाया गया था. क्या है ये OSI मॉडल? एक्चुअली दिस OSI मॉडल इज द थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ ट्रांसमिशन. This was generated by International Organization for Standardization. The outlines and other details tells us the concept of the blueprint of different data communicating purposes layers. Actually ये जो है मॉडल, ये कहते हैं कि जो भी थियोरिटिकल ब्लूप्रिंट देते हैं हमारे डेटा ट्रांसमिशन के, उसी के आधार पे सेवरल स्कोप और सेवरल लेयर्स को डिक्लेयर करते हैं ये मॉडल. ये मॉडल जो है ये हमारे डेवलप करते हैं एक स्टैंडर्ड रूल, जिसको फॉलो करके नेटवर्किंग का ट्रांजैक्शन हम फॉलो कर सकते हैं. ये ट्रांजैक्शन कभी भी किसी भी लेयर पे कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम कहाँ पे नहीं हो रहा है, क्या से क्या प्रोटोकॉल मेंटेन हो रहा है, ये सारे डिटेल कहते हैं. इस लेयर पे 7 लेयर है. ये 7 लेयर एक्चुअली जनरेट करते हैं एक रेफरेंस मॉडल के. देयर आर 7 different model for OSI. The several layers declare the referential model to serve the outline of rules for how the protocol can use to allow the communication between different computers or nodes. Actually, each layer has their own function, has their own protocol, their own supports. Now, one thing I have to tell you that here the computer requirement of how many computer, what way the problem solving or data transmission will be solved, that will be declared in the 7 layers. ये 7 लेयर जो है उसमें से कहा जाता है कि एक एक लेयर एक एक काम के लिए, एक एक काम का प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए या एक काम को दूसरे काम में ले जाने के लिए कैसे काम करते हैं वही डिक्लेयर करते हैं. यहाँ पे हम लोग जो अदर रेफरेंसेस मॉडल्स है, जैसे TCP/IP का मॉडल, वो हम लोग दूसरे लेक्चर्स में देखेंगे. इस लेक्चर्स में सिर्फ हम लोग OSI मॉडल और उसी के 7 लेयर और उसी के एक्टिविटीज़ के डिटेल देखते हैं, क्योंकि इस लेयर से ही हमारे सारे जो भी नेटवर्किंग के लेयर्स है और जो भी एक्टिविटीज़ है उसको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है. अब एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि TCP/IP भी एक रेफरेंस है जो आपको इसी OSI मॉडल के रेफरेंस से ही रिलेटेड होके आएंगे. वो हम दूसरे लेक्चर्स में उसको क्लियर करेंगे. Now in this model, this is the referential model. I already told you. Here also the several we can compare the TCP/IP and OSI model. These are little bit similar, but what's the are differ and how the problem solving technique is different for everywhere, that will be discussed. That is in TCP/IP layers, and their relative reference will be declared in another lecture. Today's our lecture's topic is OSI models and their 7 layers.
So today we will discuss about that only. Now, one thing I have to tell you that the OSI model 7 layers, how they are active, their rules, outlines, how they will be classified, that we will discuss here. Now, before that, I am telling, if any single layer model is there, then first communication before the computer devices, the hardware and software, will be checked from the receiver to sender. That way we can able to get that what the sender want to send and what the receiver is capable of getting it or not. This single specification for aspect of communication at first by connected by an wire or any other media. यहाँ पे देखिए, अगर एक ही नोड, एक ही लेयर का मॉडल होते तो क्या होता, कम्युनिकेशन के पहले पूरा कंप्यूटर डिवाइसेस के सेंडर और रिसीवर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चेक किया जाता कि सेंडर ये सेंड कर सकता है या रिसीवर को ये मिल सकता है, और इसके बदले में और भी चीज़ें देखा जाता है कि अगर ये चीज़ें वेयर से सही से कनेक्टेड है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंटरकनेक्शन सही है या नहीं, ये सारे चीज़ें। लेकिन अगर ये कनेक्शन सारे एक ही लेयर में देखे गए तो इसके बदले में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, इससे कनेक्शन सही है, पहले एक ही लेयर में चेक होगा, उसके बाद उसी लेयर में ही हम लोगों का डेटा भी सेंड होगा, और कुछ प्रोटोकॉल्स भी चाहिए। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स है। वो सेंड करने से क्या है कि अगर कोई भी सेंडर को सेंड कर रहे हैं, स्पेसिफिक सेंडर को, या कोई भी डेटा दे रहे हैं, सभी को कोई डेटा देने का भी और लेने का, उसी का भी सेंडर और इसका एक प्रोटोकॉल्स रूल्स फॉलो करना चाहिए, किसको क्या दे, वही सारे चीज़ें। नाउ if the thing is coming application, the technical standard, that means there are if it is two layered, then the application part and the technical standard will come to our side. First of all, here also in case of the application area, there the all development and run over the increasing number of media signaling system will be checked. Then that will be separated the different aspects. Then the application layer connected with the user interface, file, accessing files detail, etc. तो यहाँ पे देखिए, अगर एक के बदले में दो लेयर आ जाते तो क्या होता, एक टेक्निकल लेयर आते, टेक्निकल स्टैंडर्ड, जहाँ पे सारे टेक्निकल डिटेल्स मतलब इंटरकनेक्शन, ये सारी चीज़ें दिखा जाता, और एक एप्लीकेशन लेयर जहाँ पे डेटा सारे प्रोटोकॉल्स के साथ दिखा जाता। अब अगर ये 4 लेयर मॉडल होते तो इसमें क्या होते, एप्लीकेशन तो एप्लीकेशन रहते, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में हम लोग सारे कनेक्शन फिजिकली कनेक्टेड है या नहीं देख सकते थे, उसे हम टेक्निकल मॉडल्स, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के अंडर में ही ला रहे हैं। मतलब टेक्निकल और एप्लीकेशन जो 2 लेयर के थे उसको हम लोग 2 हिस्से में बांट लिए अभी देखिए। और डेटा लिंक लेयर में हम लोग सारे प्रोटोकॉल्स, डेटा लिंक लेयर में सारे सॉफ्टवेयर कनेक्शन, टेक्निकल एक्टिविटीज़ देख लिए। फिर नेटवर्क लेयर में नेटवर्क का सही एक्टिविटीज़ हो रहा है, प्रोटोकॉल्स मेंटेन हो रहा है या नहीं, ये सारे देखते। यही सारे चीज़ें अगर हम लोगों को अभी देखिए एक के बाद एक करने से हम लोग सबको को समझ में आ रहा है कि कौन से लेयर में क्या करे क्या नहीं करे। वैसे ही OSI मॉडल डेवलप करने का यही चांसेस था कि अगर आपको सही से डेटा एक सेंडर से रिसीवर और रिसीवर से सेंडर ऐसे देना और लेना है, तो इसके बदले में आपको क्या करना है, ये सारे चीज़ें ही आपको देख लेना पड़ेगा कि कहाँ से क्या डेटा जा रहा है, क्योंकि एक ही सेंडर और एक ही रिसीवर यहाँ पे नहीं है। तो इसी वजह से डिफरेंट लेयर के बातें उठे और लेयर्स बने। यहाँ पे देखिए मैं वो जो 4 लेयर बनाई थी उस 4 लेयर के डिटेल्स बता रही हूँ। पहले फिजिकल लेयर में क्या होता है, फिजिकल लेयर में सारे फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड स्पेसिफिकेशन चेक होते हैं।
That means wherever the 4 layers is coming, there are the 3 layers, physical, data link and network. They are telling physical layer distributed the all physical aspect. That means all the where are connected, the hardware, the nodes are connected to each other or not. Then data link layer sets you the all details, and then the application layer or network layer sets the protocols. After that, when the evolutionary 7 models come, before that I am telling, if there is some problem also in 4 layers, so increase another layer, that is transport layer. So this way 5 layers at first come. Here, if the layers are increasing, the checking will be each and every layer, we will check every and every details. That will be the quality of the service will be increased. Now in this way, we are developing the total 7 layers. This 7 layers right now, here also not 7 layers is given, here 6 layers is given. See, transport layers, that gives you the detail, but if the 6 layers is coming, then it will gives you the dialog control, the all detail. That way the 7 layers right now comes. On the screen you can able to see the all detail, physical, data link, network, transport, session, presentation and application. यहाँ पे देखिए 7 लेयर हमारे आ चुके हैं. किस तरीके से एक के बाद करते करते हम लोग लाए. प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग क्या लिए, प्रेजेंटेशन में सारे जो सेट्स ऑफ एनकोडिंग रूल्स थे, सिंटैक्स थे, जो भी नोटेशन थे सिंटैक्स, वो सारे चेक हो गए और एप्लीकेशन में डिटेल एप्लीकेशंस हुआ. अब हम इस सारे चीज़ों के एक एक के बाद एक एक डिटेल देखेंगे. ये देखिए, ये हो गया हमारे 7 लेयर. पहले बाइनरी ट्रांसमिशन चेक हुआ, वेयर कनेक्शंस फिजिकल लेयर में. देन मीडिया जो एक्सेस कर रहा है उसके डिटेल हुआ हमारे डेटा लिंक लेयर में. फिर एड्रेस ऑफ बेस्ट पाथ, कौन से पाथ फॉलो करके सेंडर टू रिसीवर जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा, वो रहा हमारे नेटवर्क लेयर. देन ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड कनेक्शन, is this all right or not, that will be checked. Then the session layer, internal host, that means all the hosting, we have to follow one host, that will be checked in session layer. The data representation in presentation layer, and the network process to the application will be checked in application layer. तो यहाँ पे हम लोगों को देखिए, हम एक एक करके एक एक मॉडल के काम बता रहे हैं. एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, नेटवर्क प्रोसेस टू द एप्लीकेशन, मतलब इट्स प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसेस सच एज एनी टाइप ऑफ फाइल ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक मेल और एटसेट्रा. मतलब यहाँ पे हम लोगों के जो एप्लीकेशन हो रहा है, आप कोई ईमेल भेज रहे हैं, हम कोई फाइल ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई अटैचमेंट कर रहे हैं, तो ये सारे एप्लीकेशंस हैं हमारे. सो जो हम लोग 7 लेयर बनाए थे उसका एट द एक्सट्रीम लेयर ये हो रहा है. नेक्स्ट आ रहा है प्रेजेंटेशन लेयर. इस प्रेजेंटेशन लेयर में क्या हो रहा है, डेटा रिप्रेजेंटेशन. हम लोग कह ही रहे हैं प्रेजेंटेशन. सो हियर द प्रेजेंटेशन टेल यू how the data and other thing will be presented, the format of data, data structure, the layer of transferring syntax to the application layer. It will be checked in presentation layer. ये प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग डेटा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस तरीके से कर रहे हैं, उसका फॉर्मेट कैसा रहे, उसको किस हद तक दे सकते हैं, कैसे एनक्रिप्ट करें, कैसे उसको सही से एक लेयर से एक लेयर में ट्रांसफ़र करने के लिए सिंटैक्स फॉलो करें, ये सारे चीज़ें दिया जाता है. दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट लेयर ऑफ आवर OSI मॉडल. सो
After this level, you are able to get what is application level, what is presentation level. अब थर्ड नंबर मतलब सेशन लेयर. सेशन लेयर क्या कर रहा है? इंटर होस्ट कम्युनिकेशन. ये इंटर होस्ट कम्युनिकेशन क्या है? मतलब कोई भी एनकोडिंग, डिकोडिंग, एनकोडिंग नहीं, जब रिसीवर के पास पहुंचे तो डिकोडिंग, एंड जो भी प्रोटोकॉल्स है, मतलब कौन क्या कितना दे सकता है, कितना ले सकता है, वो सारे डिटेल यहाँ पे चेक होता है. सो द सेशन लेयर टेल यू द इंटर होस्ट कम्युनिकेशन, all the interconnection, the encoding, all the information securities, protocol setting, its application, or the security issues checking will be done in the third most layer, that is nothing but the session layer. तो आप लोगों को अभी तक इतना सा पता चल गया है कि सेशन लेयर तक एप्लीकेशन लेयर क्या कर रहा है? एप्लीकेशन कर रहा है. प्रेजेंटेशन लेयर डेटा प्रेजेंट कर रहा है. सेशन लेयर इंटर होस्ट कनेक्शन देख रहे हैं, इंटर होस्ट कम्युनिकेशन को चेक कर रहा है. फिर आ गया हमारे फोर्थ लेयर, फोर्थ मोस्ट लेयर, दैट इज नथिंग बट ट्रांसपोर्ट लेयर. अब इसको शुरू करने के पहले और एक चीज आपको बता देती हूँ. ये जो तीन लेयर, हर एक लेयर का अलग अलग काम देने का एक ही बंदोबस्त है ताकि सारे काम पूरा सही से हो. अब ट्रांसपोर्ट लेयर में देखिए एंड टू एंड कनेक्शन सही हो रहा है. एंड टू एंड कनेक्शन मतलब पहले तो फिजिकल लेयर में कनेक्शन हो चुका था, नहीं. एंड टू एंड कनेक्शन मतलब आप जिस सेंडर को या जिस रिसीवर को सेंड कर रहे हैं या जो सेंडर सेंड कर रहा है उसका उसके साथ सही कनेक्शन रहना चाहिए. जैसे देखिए, अगर आप सपोज कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं फिजिकल कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ, आप एक चाइनीज़ या जापानीज से बात कर रहे हैं, आपको आता है इंग्लिश हिंदी, तो हिंदी से चाइनीज़ ट्रांसफ़र आप नहीं कर पाएंगे. ये सारे चीज़ें ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए है, सही से किसका साथ किसका कनेक्शन हुआ. नेक्स्ट आ रहा है नेटवर्क लेयर, that the address and best path will be chosen. If you have to, if that notification is given that these are the nodes, there you have to connect and there you have to send the nodes. Now how can you connect? What will be the best path? That will be chosen in the network layer. ये है हमारे ऊपर से लेके छठा लेयर और सिक्स्थ लेयर, जहाँ पे हम लोग कैसे सही से कनेक्शन करें उसे दिखा रहा है. मैं यहाँ पे नेटवर्क लेयर को सही से और एक बार बता रही हूँ. ये नेटवर्क लेयर का वाइड एड्रेस लेते हैं, ट्रांसफ़र डेटा करते हैं बाय सबनेट, ये राउटर पैकेज को फॉरवर्डिंग करते हैं, आईपी एड्रेस चेकिंग करते हैं, टीसीपी आईपी सॉफ्टवेयर जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस में आप लोग देखेंगे उसी सारे कनेक्शंस करके रखते हैं. तो ये सारे कनेक्शन सही से होते हैं हमारे नेटवर्क लेयर में. दैट मीन्स अ नेटवर्क लेयर इट विल बी चेक्ड प्रॉपरली. नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर दिस नेटवर्क लेयर, then the data link layer is coming. Access to the media. That means physical layer will change you the media physically connection. But where the media connection, that means your network connection, total networking network is little bit okay or not. या आपके कोई भी प्रोवाइड्स करने वाले जो नेटवर्क है, डेटा सर्विस कर रहे हैं, वो सारे चीज़ें सही है या नहीं, वो सारे चेकिंग होता है हमारे डेटा लिंक लेयर पे. सो दिस इज द सिक्स्थ लेयर. नाउ द थिंग इज दैट डेटा लिंक लेयर, how they will work, we can see in little bit detail. See here in the data link layer, the MAC address, the media access control will be checked. LCC, that is the logical link layer, will be checked. That means all the connectivity, all the detail of data control, data access along with the data link interface will be
maintained in the data link layer. Now one thing you can able to say that what's that? Suppose any type of token processing. टोकन लेयर के काम क्या होता है वो हम लोग अलग से वीडियोस है हमारे उसमें. तो कंट्रोलिंग ऑफ कंट्रोल एक्सेस मीडिया थ्रू गिव द डेटा NIC मैक इज़ वेरी वाइटल. जो लोग कंप्यूटर साइंस के हैं उन लोगों को पता है. LCC द लॉजिकल डेटा लिंक, ये सारे हो गए. अल्टीमेटली आया फिजिकल लेयर. फिजिकल लेयर क्या है? फिजिकल लेयर है हमारे जस्ट फिजिकल कनेक्शन. ये फिजिकल लेयर में ही हम लोगों का चेकिंग होता है कि कैसे और एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड है. मतलब कोई भी वायर कनेक्शन हो या वायरलेस कनेक्शन हो तो सही से फिजिकली कैसे कनेक्टेड हो, या उसका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इफ देयर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के बात हो या कोई भी आपके इंटरकनेक्शन के बात हुआ तो वो इंटरकनेक्शन मतलब सेंडर को सेंड करने के लिए भी कुछ एक्सेसिबिलिटी चाहिए और रिसीवर को लेने के लिए भी. सपोज एक फिजिकल कम्युनिकेशन के बात की कि आप लोगों को ज़रूर दोनों अगर कनेक्शन रहना चाहिए तो दोनों के पास कनेक्शन करने के लिए कोई फ़ोन होना चाहिए जिस फ़ोन से दोनों का वॉइस जा सके और आ सके, इतना कनेक्शन होना चाहिए. ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए. जैसे व्हाट्स वी आर टेलिंग दैट इन केस ऑफ the physical connection, the network interface cards, cabling, any type of cabling just like twisted pair fiber or the coaxial cable. This all detail if you want, there is another video in our description box. I will give you the description, the link also. Now see there, यहाँ पे सारे layers को हमने एक साथ में दिखाए. तो यहाँ पे क्या हुआ? प्रेजेंटेशन से लेके अप टू सेशन तो डेटा के बात हुआ. ट्रांसपोर्ट लेयर में हमारे टोटल सिस्टम, देन द प्रोडक्ट एंड द कनेक्शन किस तरीके से कैसे किसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. देखिए टोटल जो 7 लेयर है उसमें कहाँ पे कौन सा काम हो रहा है, कहाँ से कैसे हो रहा है, उसके डिटेल मैंने इस पिक्टोरियल व्यूज में दी है. ज़रूर देखिए इसको. प्लीज़ फॉलो द स्क्रीन. डिफरेंट लेयर्स, किस लेयर्स में कैसा काम हो रहा है. देखिए पहला 3 लेयर को हम लोग कम्युनिकेशन सबनेट बाउंड्रीज कह रहे हैं. इसके बाद 5th to 7 रिलेटेड हो रहा है एप्लीकेशंस के. 1 to 4 कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहा है. ये सारे डिटेल मैंने पिक्टोरियल व्यूज में दे दी है. स्क्रीन को थोड़ा सा फॉलो कीजिए, उसमें आपको मिल जाएंगे. सी द फॉलो द स्क्रीन. हियर आई एम गिविंग द व्हाई द फर्स्ट 3 layers is known as word, that is the communication subnets, and the first 4 nets is using for word. Just detail of every layer just I am keeping here. The first one, application layer, which level application access the network services. That means here the represent the services is directly support the software applications for the file transfer, database access or electronic mail, etc. Whereas the presentation layers related to the represent the transmitted data, translate different data representations from application layer into the uniform standard format, providing the services secure, efficient, and data transmission, just like data encryption, data compression, or etc. Next one, that is, so every layers already discussed, their activities also discussed. Now the brief one shots I am telling one by one layer once more. That is only because of that you can able to get it properly. Now the session layers. Session layers allow the application of different computers to establish, use, and a service. Establish the dialogue control. Regulates which side transmit, plus when, how long transmit. Next one, after the session layer, now we can able to change this sessional change. That means all the after the session layer, all the connection applications
establishment, or every details is done. So presentation layers, application layers was fully involved with the data, whereas it is also fully involved, little bit involved with the data. Now the transport layer manages the transmission packets, repackets, handles error recognition, recovery, reassemble packets. If it is correct order or not, that will be checked here. These all are transport layers activities. Now after that, after this transport layer, so the transport layer, after this third layer, after what we discussed already, presentation, application, presentation and session, that was involved with the data. It is the manage the transmission packets, error recognition, recovery, etc. So here from the total our part of controlling, that means our what way the technological part is coming. So after that, the network layer, it will the addressing, routing within data subnet, the subnets process based and static tables, the addresses manages transmission, translates logical addresses, and the managers of physical addresses. These all are connected here. This is the network layer. So after this is here also, it is a technological layer. It is used only because to get this what the data I am sending. Before that a communicating media will be established, then only we can send the data. That will be checked here also. That is, it is also technology based. Here the technology of sending and receiving will be checked. So after this layer it's done, next two layers that also involved with the technology affairs, all the connection or all the purposes. So after 4 layer we are distributing first physical data link, which we will discuss. This data link, see here, data link, we am telling these are the packages of raw bits from physical layer into frame, the logical reliabilities of transmission frame. It waits the acknowledgement from receiving computer, retransmit the frames which acknowledgement not connected to each other. These all are the data link layer. तो data link layer में क्या हो रहा है, मैं पहले ही कह रही हूँ कि ये जो सारे लेयर्स है अप टू 4, ये सारे कनेक्शन को सही करेंगे. उसके बाद 3 लेयर सिर्फ डेटा जो आ रहा है उसका सारे चीजें सही करके भेजेंगे. So up to this level, I think it is right now clear to you. The last one, that is our physical layer right now. The physical layer, it is the physical connectivity. Defines how the cables is attached to the network adapter and what transmission technique is used to send the data. But here, one thing, OSI models gives you 7 layers. But Internet Protocol, IP layers, IP protocol, IP rules, models gives you the 5 layers. What they are? See here, I am discussing just the comparison. The application, presentation and session, these all are application there. Transport was TCP. Network, little bit after network is taking IP. Next, to some extent network and data link, telling you the network interface, and physical means hardware. So the services of this OSI models is, in the OSI model, each layer provides the service of the layer, consume the service provider's layer. It is active element in the layer called entities. The entities in the same layer in different mechanism is called peer entities, peer entries. So after this level, you can able to get what they are telling and what's their title. So what is the OSI model? What's the service of OSI model? ये हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं.
तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो भी सर्विस कर रहे हैं, जो भी OSI मॉडल के, तो ये OSI मॉडल किस तरीके से काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है ये हम लोग समझा दिए। आज के वीडियोस में हम लोगों का मोटिव था, जो मोटो था कि OSI मॉडल का जो 7 लेयर है वो हम लोग देखेंगे और उसका क्या क्या एक्टिविटीज़ है वो हम लोग देखेंगे। अब ये लेयर जो बना रहे हैं उसके एक प्रिंसिपल है, कोई भी ऐसे ही बना नहीं सकते हैं। तो उस प्रिंसिपल कैसे है, उसमें हम लोग लेयर n प्रोवाइड सर्विस ऑफ लेयर n+1, इसके जो रूल्स है, रेगुलेशन है सर्विस प्रोवाइडर्स सर्विस यूजर्स के, वो हम लोग स्क्रीन पे आपको दिखाए हैं। ये लेयरिंग प्रोसेसेस, लेयरिंग प्रिंसिपल्स बहुत अच्छे से समझने के लिए हमें TCP IP लेयर्स को समझना पड़ेगा। वो हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में उसके सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारे मोटो था जो 7 लेयर्स है, उस 7 लेयर्स में क्या काम होता है, क्यों ये 7 लेयर्स को बनाया गया है, इसको बनाने के फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो सारे डिटेल को चेक करना। तो वो हम लोग इस लेयर्स में कर चुके हैं। अगर आपको एंड तक ये वीडियोस सही लगा है, आपको कुछ भी चीज़ें अच्छे से लगा है, तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस और भी मिलने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो।